The best brain of the nation may be found from the last benches of the classroom. Sir, could you please tell us what made you to believe in the last bench students? Where are you? Repeat your question. The best brains of the nation may be found from the last benches of the classroom. Could you please tell us what made you to believe in the last bench students? Because I was the last bench. Even I too, sir. Sometime. दोस्तों एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किए गए थे। जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे 7 कुर्सियाँ थी। बीच वाली कुर्सी सबसे बड़ी थी और ऊंची थी, क्योंकि वह राष्ट्रपति थे, उनको वहाँ पे बैठना था। उन्होंने बोला ना कुर्सी हटाओ, बराबर की कुर्सी लगाओ। वो बोले नहीं सर, ये हमारी स्पेशल चीफ गेस्ट की कुर्सी है। तो वो समझ गए कि एजुकेशन के महागुरु हो, तो उन्होंने वाइस चांसलर को बोला कि आप बैठिए। वाइस चांसलर घबरा गया, वो बोला राष्ट्रपति आप हो, इस देश के पहले फर्स्ट पर्सन हो। जिसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी हटवाई और बराबर की कुर्सी लगवाई। ऐसे थे हमारे भारत के महान व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। How did I become so great? That's the question. Well, I don't know how became. I don't know. It's a relative terms. So I personally believe you must have a dream. Say, I must have a dream. I must have a dream. I must continuously acquire knowledge. I must continuously acquire knowledge. Hard work. Hard work. And perseverance. And perseverance. One should not be not afraid of problems. Not afraid of problems. Then you will be successful. Okay.